I don't know the Sukadhari, but something so 590. Tisso vivanno bhavati hinsam attanam attana natena peta palanti niratha parideva. Tisso the fish here becomes lean and vivanno is the rang doya. One is the rang. So it becomes lean and pale. Hinsam attanam attana. He is hurting himself by himself, by crime and death. Natena peta palanti. The dead are not saved by that. Niratha parideva. Therefore, lamentation is no way. Sukam apajjam jantu dhyo dukkham nigacchati anutthanto palankatam sukasya vasam anvave. So he doesn't shokam, doesn't leave it behind. He again gets into dhyo dukkham nigacchati, again gets into pain. Anutthananto kalankatam sukasya vasam. So he evades the dead, he gets into grip of sorrow. अन्येन पश्य गमने यथा कम्मुपगे नरे मच्चूनो वसमागम पंदन ते विद पान. ट्रांसलेशन करने की कोशिश अपने अन्य पश्चात देखो वामिन हो जाते हुए अन्य मान्य. So देखो उनको जाते हुए गमने. So look at the others while they are passing away. आगे जिथा कम्मुपगे नरे, जैसा उसका करना न जाए. मच्चूनो वसम वसम के वश में आगम, मृत्यु के वश में आकर खंडन थे विदित पाने. खंडन तो मतलब कांपने लगते हैं. So people begin to tremble after falling onto the travel. येन ही मजंती मन्यंती. मन्यंती को मानते हैं. ये नहीं मन्यंती. जैसा जैसा वो मानता है ततो तद होती अन्यथा. अन्यथा होता उससे अन्यथा है, होने वाला कुछ और ही है. यथा दिशो विना भावो बस लोकस पर्यायम. यथा दिशो मतलब seeing in this is the way. Vina bhavo comes great disappointment. Pasya lokasya paraya. Seeing the way the world works, one gets disappointed. आपि वस्सा सतम जीवे धियो वा पन्य मान्यवो. Pana दी. धियो वा pana मान्यवो नाति संग विना होती जहाति इद्ध जीव. अपि वासा सतम भी. अभी मतलब भी. वस सतम मतलब 100 वर्ष. सतम शत शव को बोलते हैं. अच्छा 100 years. हाँ. इवन इफ ए पर्सन जीवे मतलब जिए 100 अगर कोई 100 साल भी जी ले, जियो अपन न मानव और इवन मोर. चलो कोई बात नहीं. नाति संगा वे ना होती. अंततः तो वो अपने रिश्तेदारों से अलग होने वाला है. जहाति इधर जीवितम. जब लीव्स इस जीवन को छोड़ के जहाति को छोड़ देता है. So when he lives a life in this world, he is bound to be separated. 100 साल जी लो, ज़्यादा ही जी लो, चलो कोई बात. तस्मार्हतो सुत्वा विनेय परिदेवितं प्रेतं कालं कथं दिस्वा नेषु लब्धो मयाति.
इसलिए किसी अरहंत की वाणी को सुनकर, जैसे अरहंत मतलब किसी भी संत की वाणी को सुनकर इन्हें या परिदेवितम, अपने जो दुख दोनों को हटा के रखो, लीव इट असाइड. एतम कालगतम, दिस one, seeing the one that is dying, passing away, neso lavamayi iti. I don't think he will not be seen by me. This is what is going to happen. This is the meaning of dying. यथा शरणमादितं वारिणा परिनिर्देय एवं हि धीरो सपन्नो पंडितो कुशलो नरो क्षिप्तुमुपपतितं शोकं वातो तूलवं धनंजय. यथा शरणमादितं, आदित्य मतलब आग, सन को भी कहते हैं आग. शरण शरण मतलब उस शरण में आग, जो घर उसकी घर जो आग में लग गई जिसके. वारिणो परिनिर्देय, वारिना मतलब पानी, वारी पानी में होते हैं, निब्बे उसको हटा देते हैं. जैसे हाउस इज ऑन फायर, यू एक्सटिंग्विश इट बाय वाटर. एवं भी धीरो सपन, इसी तरह से एवं इसी तरह से जो धीर है, धन्यवान है, पंडित है, कुशल है, कुशल आदमी है, क्या करता है? क्षिप्पम उत्पत्तितम शोकम. क्षिप्पम मतलब शीघ्र, उत्पत्तितम जो पैदा उत्पन्न हुआ, जो शोक उत्पन्न हुआ उसको शीघ्र पानी, जैसे पानी की तरफ डालते हैं ऐसे बुझा देता है. वातो तुलम व धम से, इस तरह से जैसे कि जो तुलम जो होते हैं, वात मतलब हवा जो है, तुलम दम से जो कॉटन को जो करते हैं ना, पहले करते थे ना, आप तो नहीं करते ना. हाँ, वो करते थे ना कॉटन को, जब तोड़ते थे, एक ऐसा होता था ना, आप लोगों ने देखा भी कि नहीं, ऐसा चीज होती थी और उस पर एक वो होता था धागा सा, मेटल का, लेदर का, उसको ऐसे खींचते थे थोड़ा से, तो वो कॉटन के टुकड़े टुकड़े हो जाते. जैसे कि जो कॉटन है जिसको भी टुकड़े कर दिए गए हैं, वो हवा से फूक कर उड़ जाता है. इन द सिमिलर मैनर ही डिस्पेल्स हिज सॉरो. इसमें वैसे ग्रीफ का भी कुछ वो है क्या कि आई एम रिलेटिंग इट टू द सेपरेशन फ्रॉम नियर एंड डियर वंस एंड सो ऑन. सो इज इट सजेस्टिंग दैट grief itself will dispelled or grief will not arise? Is it distinguishing grief from sorrow? I can't say, but the exactly what is parideva matlab lamentation, crying and all. So he'll understand कि भाई मैं उसको देख नहीं पाऊंगा. This is to be understood in that manner, isn't it? विषय में था ना, seeing that one has passed away and is dead, let him think he will not be able to see by seeing by me. So that is the understanding. And so as soon as the sorrow arises, you should dispel it away, like the wind blowing away after fall. So is it suggesting that that sorrow should be dispelled away. Will be dispelled by a wise person who listens to the wise saintly people and understand this fact. So let him subdue his lamentation. You understand that this is the way nature is, that people will pass away. वैसे कल मैं एक्चुअली अजन ब्रह्म का एक टॉक सुन रहा था इसी पे, and he actually suggests that grief is a very Western concept, that and that in traditional Asian societies perhaps death was taken as much more a part of life, and that ये जो इतनी grieving वगैरह होती है, that's something that is unnecessary almost. Unnecessary. Not really. I mean, that is my word, but no, I mean, the fact that you are separated from a near and dear one, you will remember it, but there is no need to
get overwhelmed by sorrow. But that needs a great listening to the words of the saint. Tasma arhato shutva. Having understood it means you really understood this is the way life is. This is the way it is. Then if you understand it, then the sorrow will obviously come down. But it doesn't happen that you just forget it. Overnight forget away. Khatam ho gaya. That's not it. So the feeling of grief is natural. Yeah. It's And then Grief in the sense of remembering, not in the sense of sorrowing. In the sense of feeling the separation, that is a fact, isn't it? In the sense of feeling the separation from somebody is a fact, but you take it as a truth. I was also surprised to see his construction of it. बाद में बात करेंगे अभी. I was also surprised. The Eastern Western वेस्ट में उसको थोड़ा दबा दिया जाता है. ईस्ट में इट इज लेट टू कम आउट. इट्स मोर पार्ट ऑफ विच इज ट्रू, पार्ट ऑफ लाइफ वाला ट्रू है. वेस्ट में इट इज काइंड ऑफ थोड़ा सा वर्जन है उससे. मुझे तो हमारे यहाँ एवर्जन ज्यादा लगता है कि मत बात करो, इसकी बात क्यों करते हो, इसकी बात क्यों करते हो. डेथ की ऐसी नहीं, शुभ शुभ बोलो. नहीं, हमारे में वो कॉन्सेप्ट भी है कि बुरा बोलना ही है. हाँ, बट आप हमारे जो 13 डे का वो होता है पूरा, इट इज मेंट टू फॉर द पर्पस ऑफ कि लेट द ग्रीफ कम आउट rather than उसको दबाने की बजाय. You have such a elongated time given for saying goodbye, if I may use that word. There they don't give that. They want to run away from that fact. That is the point. So, the day a person is passed away and is buried, next day they are back at work. So they don't give that time for subduing and accepting it, basically, accepting the reality of separation. So we have to accept that reality, but it takes time for us. So it's okay. बट एक चीज और मैं बोल रहा कि हमारे यहाँ उनके यहाँ जो फर्क है वो एक बार एग्जाम से मैं तो भी शायद मेंशन कर रहे थे शायद उनकी मदर पास अवे. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे ना उसका पूरा हवा बना रखा होता है, पूरा जो प्रोसेस ऑफ वो नहीं तो फील गुड. हाँ उल्टा वो भी किया होता है कि भाई टू दी हेवन और उसके बाद जब वो आप उनके जो क्रिश्चियन वो होते हैं उनको बुला लेते हो तो दे डोंट इवन अलाउ यू टू लुक एट दी कॉप्स इवन द क्लोज वंस. घर के लोगों को भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल जान से मुझे किसी एक टॉक में कह रहे थे कि उनको जब ले जा रहे थे कि भाई उनको जब बरी करना था तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ. क्यों, मतलब you will not be able to handle it. मतलब कि as if कि I can't look at death directly, I can't look at my dead body of my mother directly. They didn't allow him to bury. कहते बस जाओ और मिट्टी फेंको जाओ. You can't handle it. So, and a very similar incidents where Ajahn Veeradhamma, वो 9 years he was in Canada taking care of his mother because there was no one. तो वो पूरा अमरावती छोड़ के कनाडा अपनी मदर के पास आए, पूरा 9 years वहाँ रुके और वीकेंड में मॉनेस्ट्री जाते थे. एंड व्हेन हिज मदर पास्ड अवे वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि मैं बुलाऊंगा ही नहीं उनको. उनका क्रिश्चियन ट्रेडिशन नहीं था, कोई दूसरा ट्रेडिशन था. He said कि for 1.5 days he sat with the dead body of her mother, meditated there to really grasp it कि she is no more. तो और वो भी यही कह रहे थे कि वो क्योंकि एक बार मैंने उनको बुला लिया जो रिचुअल्स करते हैं, then they will not allow me to sit with my mother. वहां पर थोड़ा सा ये तो है, एटलीस्ट इन 2 इंसिडेंसेस से
पता चला कि ये तो है। हमारे यहाँ तो you know there are lot of rituals. You bathe the dead body and you do so many things with the dead body. You are not saying कि भाई मैं नहीं कुछ नहीं कर रहा. The thing is also done by the closest son or daughter. So उनका बड़ा फायदा रहता है ना, long drawn process so that you are done with the whole thing. And in case of a person dying in mature age, you're usually done with it. If it is a untimely death, तब तो definitely मुश्किल है. Then it's a deeper wound. Then it takes a lot of time to heal. I think what Ajahn Brahm has been getting at is that if we are able to contemplate during our life that death is going to come, then That's right. Obviously, then so Vedant Sudhir and all, they used to go to mortuaries and sit and meditate. I mean, क्या फर्क पड़ने वाला है? And there was a tradition in some Eastern society. I read somewhere. I think you were mentioning it. Ki they hang the corpses of dead body, right, in the public places for a month or 2 months. उनके अपने घर के बाहर, and they all pass by and see that. Till the point वो फिर deteriorate होने शुरू हो जाती है, तो फिर then they do the rituals. So some of these Eastern traditions, take it to that far कि वो जो दान समेदो वगैरह especially जाके करते हैं, वो they made it part of their life. When even if some neighbor has passed away, you will see it again and again for at least a month. वहाँ पर kids are not allowed. हमारे यहाँ तो kids are part of the rituals. Suddenly kids see that as something very dreadful. Here kids are part of it. the other intriguing thing came up, not in this talk, in some other one. That's only 49 days वाला क्या चक्कर है? ये कभी आया? 7 weeks of after enlightenment. वही कह रहे हैं. ये जो death के बाद ये 49 days तक the person remains. That is this Tibetan belief. अच्छा. That is Tibetan tradition, not in. They believe there is an intermediate state, Bardo जिसको कहते हैं. Tibetan में. Tibetan की एक फिल्म बनी थी ना उसकी Tibetan dead के ऊपर. So elaborate rituals are shown. So 49 days they keep it. So they keep it for 49 days? Dead body? For one time. But they believe that for 49 days the spirit, if you use that word, is hanging around the place because it doesn't get another body. It's not able to get a proper place to take the birth. So during that period, therefore, the relatives remain and prayer, chanting. So from the way we understood Chitta and Immediate. Immediate. Sankhara Pratyaya Vinaya. Immediate. Next mind moment. Finished. Story is finished. But is it conceivable that there is some residue of some sort of consciousness? Not according to Theravada tradition. अब तो ये कहना पड़ेगा नहीं सकता. Tibetan tradition तो ऐसा है. They assume that there is a Bardo जो होता है intermediate stage. Then how do they? Which can extend up to 49 days. They don't say it is always. But how do they explain it in terms of Chitta stream then? उनका अपना dilemma अलग है. उनका ब्रह्म. अच्छा. dilemma अलग है. जब मैं बुद्धिस्ट साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे तो मैंने पहले देखी बुद्धिस्ट साइकोलॉजी की किताब तो मैंने मंगा ली. मुझे मालूम नहीं था
then I realized कि वो तिरुतन ने लिखी हुई है. तो मैंने कहा distinguished monk, but he had a different set of mental factors and different. तो अब बच्चों को ऐसे बताएंगे इसका ये इसका ये, तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो पहले कह दिया ये पढ़ा, वापिस बता दूसरों को अलग अलग है. I mean, ऐसा नहीं कि they are contradictory नहीं है. Some other things are there. Some are missing, some are उसको इधर से उधर कर दिया है, सती को यूनिवर्सल कर दिया. Shailesh has a question: why different theories in Tibetan versus Theravada? Because of the local assimilated. But there's a local tradition का नहीं है. This must have been a Nalanda product. जो धर्म है. नहीं, वो जो 49 days वाली बात है. Oh, that is of Tibetan origin. Yeah, maybe. I have not seen it elsewhere. Because Buddhism की tradition रहा ना, that the rites and rituals many places got assimilated from the local. Yeah, correct. जो कश्मीर शैविज्म में था, तंत्र था, वो उसके साथ जुड़ गया. Tantra is a very powerful school of Tantra in Kashmir. So it joined along with Buddha's teachings in some way, in some kind of unknown way, to produce their own branch of Vajrayana. Tantra में तो काफी education है. तो वो बातें भी करते हैं. It's very, very fierce and unacceptable practices. But Theravada doesn't talk about this 49 days, etc. That is an immediate. Talks of 49 days of Buddha. मैं तो ये सोचा वो पूछता है. और वो क्या था सर? After enlightenment for 7 weeks, he stayed there without food and water, absorbed in the. Oh, Ratnavan, वही तो originally that is what Ratna. There is a Ratna घर भी बनाया है. So there are 7 places. बोध गया गए हो ना तुम? बोध गया नहीं. बोध गया में there are 7 places identified where he stayed for 1 week. 1 week तो बैठ के सिर्फ पेड़ को ही देखते रहे. What happened? At expressing gratitude to the tree. And there is one place which is called Ratnagar where he reflected on the Pathan. So when he was reflecting on it, his whole body was radiating 7 colors. On the Pathan or Abhidhamma? Abhidhamma is Pathan especially. And then there are other stories about it. बने हुए from places are small places are made to commemorate it. And there is one place यहाँ पे जो pond सा था वहाँ बैठ गए. Fierce storm and नाग came and so that his food on his head was of नाग. So many stories are there. आपने 49 days का तो मुझे लगा वो ये 49 और 49 किस रिलेटेड लग रहा है? दोनों 49 है. दोनों 49 है. और इंसिडेंट है. चलिए, let us conclude it. परिदेवम पजापंचम दो मनस्संचय अत्तनो सुखम ऐसानो अबब्बे सलमत. तनम सुखम ऐसानो, पहले भी कई बार है ना, अपना सुख जो चाहता है, one who wants his own happiness, तो क्या करना चाहिए? अबब्बे सलम, इस एरो को, सलम मतलब ना एरो को निकाल लेना चाहिए. किस एरो को? जो उसने अपने आप ही अपने पे डाला हुआ है. परिदेवम प्रपंचम, जो lamentation and yearning and grief, दोमनस अर्थम, करने का हटा देना चाहिए. बुल्ल हस्सलो असितो संत्यं पापुय चेतसो सब शोकम अतिक्रांतो अशोको होति निवृत्तो. जिसने ऐसा कर लिया है उसको कोई क्लिंगिंग नहीं रहेगी. जो अपने संत्यं पापुय चेतसो, शांत हो जाएगा, चित्त शांत रहेगा. सब शोकम अतिक्रमो, सारे शोक से अतिक्रमण हो जाएगा. ये लोअर का ऑल देन अशोको होति निवृत्तो, ही इज फ्री फ्रॉम सॉरो, बिकम ब्लेस्ड. This is the end of Sarva Sutta.
Salla refers to arrow. Salla means arrow. Dart actually. Dart होता है ना, फेंकते हैं. So you need to be Rajesh or Deepak has done the. सारा दीपक का काम है सारा. आपने contribute नहीं किया. सर हम ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और नहीं कर पाया. जमा नहीं. So I have something actually, and what I've done is I've got my own So music. you want to say it beginning or as it go? Next start. Yeah, maybe I just bring this one thing, or because the other couple of things I have can be intertwined with the presentation. But यहाँ पे आ जाओ ना, यार तेरी आवाज वहाँ से नहीं आ पाएगी. I was just speaking with my colleague. We were talking about our work, and so we were wondering about volition, motivation, and so on and so forth. And we came to the conclusion that there doesn't seem to be a lot of altruism in what we do. Much of it seems to be driven by our need to escape from internal discomfort if we were not to do what we are doing. So that is the bhumika, that's the background. And then I started wondering something had happened last month. There was a friend whose birthday was coming up, and so I asked. Something written. So I asked his wife कि भाई मैं क्या दिलाऊं उसको. So she mentioned a certain watch, was quite expensive. And she didn't suggest that I should get it, but I actually asked her कि उसका मन क्या है. That was my question. उसने truthfully बताया कि ये मन है. And in that instant moment, I decided that I'll get this. Now this was not expensive thing, but I had decided and I made that statement and so on. And subsequently, all these thoughts started coming. Do I really need to buy something that expensive? Is it worth it? Etc. 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 So in the context of this, so two separate incidents, and then I started wondering कि was the primal motivation with respect to the gift initially that minimal chitta, and then the mental commentary on that started about it being expensive, about my being over enthusiastic, etc. 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 And it really made me wonder कि ऐसा कई बार होने लगता है, मुझे लगता है कि जो the first mind moment seems to be the one that tells you what should be done in that situation, and if you're able to catch it, good for you. And after that, this whole commentary comes in, and then I reflected on many other situations where this also happens. And when I was thinking about this, the minimal chitta things didn't come to me, but later on during the day, it occurred to me that perhaps that is what is happening, and I wanted to share this here and check if जो फर्स्ट इंस्टेंस में आता है जहन में, कई बार हम उस पर नहीं करते हैं, कई बार हम मेंटल कमेंट्री सुन लेते हैं उसके बाद, बट इज दैट व्हाट द मिनिमल चित्ता थिंग इज? That's really what I wanted to share. You
Chitta is basically when there is mere seeing, mere listening, mere thought. The moment additional things come up, it becomes wholesome or unwholesome. So, when a person is reflecting on it, then there is mental factors are all there's a huge swirling of mental factors around. It may be wholesome, it may be unwholesome. It is important to distinguish. So by self-reflection, it's usually possible to find out at least this much, wholesome है कि unwholesome. जितना पता चल जाता है. पूरी डिटेल में पता चलेगी ना चलेगा. Prominent factors do appear in our awareness. We can be aware. Prominently, initially though it was a mudita factor. Factor of mudita, you see somebody and you share the joy of happiness. And then you can see, if you analyze, you can see how sequence of chittas arise. Within a moment it will happen. It doesn't take time. Immediately other consequences will come. Or miserliness will come into that's also a mental factor. Miserliness will come. Luxury as a mental factor. Unwholesome. That comes into picture. Which is a form of attachment to our value. So you can see all those things operating. And then you see two sides. And the factors arise and pass away. Don't take them personally. The moment you take it personally, then they will break. The moment you see it as a reason passed away, okay, if the reason passed away, then you will be free and take a decision without getting overwhelmed by the mental factors. Otherwise, you may take a decision because you want to keep up your image, or you want to keep up your relationship or other things. So then, that also is okay, you become aware of it, that's all. So our key idea is to depersonalize. The key idea of Dhamma is to depersonalize everything. So to depersonalize, you to see them. You don't say, मैं तो इतना तंग दिल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ. When we are caught in the trap, we see the arising of a mental factor. It's okay. Because of so many reasons, past reasons, present provocations, the kind of mental stream which is flowing, still it appears, okay. You cannot reinforce it. If you take it personally, you reinforce it. Just let it go arrive and see, okay, done with it. ऐसे चली जाएगी. The factor has arisen in awareness. If we then let the factor cease naturally, not that अरे मैं तो मेरे मन में तो भी मात्सर्य भाव जाता है, देखो कितना तंग दिल हूँ मैं. So the whole process of meditation is in sync with the whole understanding. When you are understanding it such depth that you are identifying the constituents of the chitta, then their ability to grip you will fall down. कहते हैं ना मार तुझे देख लिया. You've seen it. That's it. So these are all soldiers of Mara. They are all soldiers. You see them. Not only you see the 10 commanders, you see all the soldiers also. So I was wondering if from a decision-making point of view,
it is helpful to reflect back on the primal moment. Key thing is decision should be done with a calm mind. When the mind is agitated, and we can discern it. अभी पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं, पता चलता नहीं चला. अगर पता चल गया कि मन में कुछ उथल पुथल हो रही है, if possible, we delay. कई बार नहीं possible होता है. Caught in a situation, you have to decide. हो गया सो हो गया. More than uthal puthal, I think in the present example, it was just it was a accumulation of so many different. Yeah. So they disturb the peace of the mind. I mean, don't mean very massive storm, but they disturb the equanimity of the mind. All kinds of thoughts coming in here and there, which some of which we feel unpleasant. I should not be. ऐसा आता रहता है ना अंदर से. It will not become explicit. Internally, it will become explicit. Yeah, देखो, there is still that attachment to money, attachment to this. These are all implicit things operating. No, in fact, what then happened was very interesting. Then this also came. Oh, how magnanimous I am, because eventually I went and bought it. So that also came. That I was able to catch very quickly when that came. But I was trying to relate it again and again to the chitta and the arising and so on and so forth. To Sledge had this question that could the first mind moment be a reaction rather than being a some that you have to find. Nobody else. बट दरअसल बताइए उसको थोड़ा उसी का खुलासा करिए, क्योंकि मैं उसी को वो सोच रहा था कि इज दैट द वो जो आपने गोला बनाया था. मिनिमल चित्ता तो सब में होता है. स्टार्टिंग हो गई, उसके साथ और मेंटल फैक्टर्स भी होंगे ना, तो वो बाकी कोई भी मेंटल फैक्टर ना हो, दैट इज क्वाइट दैट इज हैपेंस जस्ट एट द टाइम यू जस्ट रिकॉग्नाइज दैट्स इट. Just see. And no other mental factor is arising. Because you cut off all attachments, Vinay, Loke, Avidya, Domanasam, everything is cut off. Then you will see. Or just listening. Just sensing. No, so you're saying that when it arose, it didn't arise on its own. No, nothing arises on its own. It's a stream which is flowing, and there's an interaction which is happening. You're not in the meditation, you're Correct. interacting with the person. So certain inputs are coming. Yeah. Physical inputs, Yeah. auditory inputs, and all kinds of things. And those are impacting, and depending on the impact, a certain thought process arose in the Correct. mind. Correct. Now that thought process, what it had, what was the basis of it? Could be various bases. It could be mudita, it could be a feeling, it could be a feeling of showing off. That there are possibilities that only the person who is experiencing can figure मैं out. समझ गया. ये आप उसके causes बता रहे हैं. Possibilities of the accompanying mental factors. The accompanying mental factors could be any of them. Yeah, so I understand. So that the initial arising of that thought itself is accompanied by those mental factors. So that's what I'm saying. But there was a fraction of a mind moment when that thought arose before the rest of the train came. The very first thought, I'm talking about the very first thought. That very first thought also, it seems, must have been accompanied by various other mental factors. Achha. Which mental factor is difficult for anybody other than the person experiencing that figure out. But the key thing for us is to see them for what they are.
impersonal phenomena which arises because of conditions. Various conditions operate, and because of them they arise. If the mindfulness is not very strong, you will not be able to figure it out. It's okay. We see the arising and passing away phenomena. And when we see arising and passing away phenomena, it becomes like seeing a movie picture. Okay? Then we don't take it. The chances of taking it personally reduce. Unless you make a self-image out of it. देखो यार मेरे मन में ये भाव जाग गया. Then self-image is out. Self-image होगी तो then obviously whole chain will start. Prabandh will start from that person. So when you were saying about altruism versus meditation, that was what your No meditation is referring to his job. हाँ चर्चा altruism से शुरू हुई थी, and that is what triggered my reflection on this instance. उसमें भी मसला वही था कि If you see it externally, हमको तो यही लगेगा they are doing it out of altruism, ना कि भाई animals welfare के लिए काम कर रहे हैं, they are doing it for the good of the animals, which is primary motivation तो वही है. But over a period of time वो subdue हो जाता है, secondary चीजें सामने है. That is the point. That happens with everybody. Every profession it happens. प्रोफेशन प्राइमरी भी नहीं होता. हाँ, इसमें primary भी नहीं होता. You're right. So Shailesh is saying that in all this reflection, there seems to be I lurking somewhere in there. Yeah, it's bound to be there. It's bound to be there. That is what we have to figure out. Huh? The whole sadhana, whole investigation is to figure out the arising of I, and then let it be. See the arising of I, see the arising of I. So, Actually, I think the purpose of full meditation then becomes to basically see through this as my meditation, my job, my family, my decisions. see the arising of I is the key meditation for us. और serious meditator, कल भी ऐसे वहाँ पे डिस्कशन हुआ IT में इसी तरह का. हम तो ये करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं तुम कितने साल साधना कर रहे हो? 16 साल से. मैंने आप कहते हो then you should reflect. Is it become कि मन बेचैन हो गया शिविर कर लो, फिर बेचैन हो गया फिर शिविर कर लो, यही चल रहा है क्या? और we get out of it. ठीक है होता है खुश होता है. If we are really interested in being free, then the freedom will come from breaking open this chain. Vicious cycle बन गया ना? Break open this vicious cycle. And that will happen only when you see through this. And the Buddha himself tells it. First, Satare Sakai Ditti. Why would he say that if it was not so? If it was not so, why would he put it top? Why would he put Samma Ditti at the first? That is the key thing. And he explains that Ditti is proper, Samyak, everything follows. What we start from Samma Vacha and all is because it's initial stage that is helpful. Practically that is the way to start. But you can't just keep on starting every time. So is sequence of events may that some help me see the rising of the I, or probably where the I was? You can't say, the very notion of giving a gift may be out of I also, or it may not be. It's very difficult to figure out for every answer. It can be out of love, Correct. It can be out of feeling of gratitude. It can be out of feeling of mudita. But it can also be out of feeling of. Okay. So suppose it was out of mudita, and then subsequently, of course, वही है ना. कुशलो चित्तो कुशल से चित्त से होता ही रहता है. कुशल चित्त के कारण अकुशल ही बन जाता है बहुत
फटाफट तो उसमें आई कहाँ आया? तो भाई आई तो अकुशल बनाएगा ना, कुशल भी आई बनेगा, आई तो उसमें इंट्रिंसिक है ना, इमोशन ऑफ आई इज इंट्रिंसिक। कुशल चित्त में अगर आई हो तो कुशल चित्त को कहते हैं, अगर आई जुड़ा हुआ है तो कुशल कहते हैं। लोभ नहीं है, दोष नहीं है, अमोह नहीं, अमोह मतलब पॉजिटिव सेंस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है दैट आई एम, और जानबूझ के मोह वो भी नहीं है। You remember it? That is kushal. What was the criteria of wholesome chitta? Alobha and those are universal mental factors. They have to be present. But amoha may or may not be present. It may or may not be present. So that is the key issue. One may do a wholesome action, but the quality of doership, non-doership. Oh, that may have doership in it, even if it is. Yeah, some element of doership may be present. And that, if not seen through, can then convert it into an unwholesome. So दादा ये तो बिल्कुल अब ये मेरे पकड़ में आ गई. So even if the primal moment was genuine, doership भी आ गई कि हाँ देखो मैंने ये किया या ये विचार आया. में आता है ना वो कुशल कर्म, कुशल कर्म का सपोर्ट कंडीशन, डिसाइसिव सपोर्ट कंडीशन कैसे बना, फिर वो एग्जांपल थोड़ी दी हुई है. दानम कृत्वा दान करता है, उपोषित कृत्वा उपोषित करता है, धर्म कृत्वा some typical, सारी बात तो so that some typical examples are given there. So when we read it, then we'll see it's such a shaking up phenomena. कुशल कर्म सारा खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होने की बात है, ऐसा थोड़ा कोई रेजिड्यू नहीं है ना. उस कुशल कर्म को सजगता से नहीं किया तो अकुशल कर्म का हित कारण बन गया, आई वाला आ गया, उसमें अकुशलता बात आ गई, आई अहंकार बढ़ गया, दान देता है और उसको गर्व करता है, अहंकार बढ़ गया. वो तो उपोषित करता हो तो उसकी उपोषित को लपेट लिया उन्होंने तो कि उपोषित मतलब आप शिविर कर रहे हो, ये समझ लीजिए. अपोजिट क्या है? उपोषित मीन्स जो ऑब्जर्वेंस करते हैं ना अष्टमी पे और उस पे, पीपल गो टू मोनेस्ट्री एंड स्टे देयर, 8 शीलों पे रहते हैं, दिन भर ध्यान करते हैं, प्रवचन को सुनते हैं. You know, that's the tradition in Western, in the monk in the Buddhist countries में tradition अभी भी है, लोग आते हैं. बुद्ध के टाइम पे ये अपोजिट कुछ और होता था. यही था उनके लिए भी था और ले के लिए. तो monks के लिए था कि they have days of observance, that there will be whole night vigil and things. तो इसी तरह से monks भी, वो जो laymen है वो भी आते हैं, they are supposed to do. but वो सब करता है बट उस पर भी गर्व करने लगता है, तो गड़बड़ हो गई. तो उसमें बड़े पावरफुल kushal gives rise to akushal. can I see. if You are not alert. you take things personally. और ये जो सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि से क्या है? राइट व्यू, मतलब हम ठीक से देख रहे हैं कि पंच उपादान खंडा दुख. राइट व्यू का भगवान बात क्या बताते हैं? दुखे ज्ञानम, दुख समुदय ज्ञानम. ये एग्जाम, ये दिस गुड डेफिनेशन ही गिव्स इन सतिपट्ठान. दुख का ज्ञान और दुख के समुदय का ज्ञान. दुख का ज्ञान मतलब to understand what is the suffering. Understanding, what does he say? Panch upadana khanda dukkha. The clinging aggregates, 5 clinging aggregates are suffering. So if we understand it thoroughly, that will be the अभी पता होता है कि right view. मतलब वो दृष्टि ठीक है ना कि 5 खंडों को, जो हमारे जिन 5 खंड हैं उनको मैं मान रहा हूँ,
तो मेन दुख का कारण वो है, अहम भाव दुख का कारण है, ठीक है। तो जब भी अहम भाव जागेगा, दुख उसके साथ चलता ही रहेगा। गणपति की पहली गाथा है ना, बोलो तो गंगा माधुमा। अब जैसे पता है कि मतलब जैसे मेरा मन मुंह के कारण दुखी, मतलब पता है जान में भी दुखी है, पर फिर क्या करूं, मतलब पता है कि मेरा मन दुखी है इस कारण से, आज के कारण दुखी है, मतलब इस कारण दुखी, ये जान लिया, फिर अंडरस्टैंड करेंगे ना तो वो अपने आप हो जाएगा। और वो पर्सनली नहीं लेंगे कि ये मेरा कोई पर्सनल एट्रीब्यूट है, ये कंडीशन अराइजिंग है फिनोमेना। ये जो धर्म में पढ़ रहे हैं यही कर रहे हैं ना, कि जैसे अभी डिस्कशन उन्होंने किया कि ऐसा ऐसा इवेंट हुआ तो उसमें कौन कौन से मेंटल फैक्टर्स थे। तो जब हम ये समझने लगते हैं कि ये मेंटल फैक्टर जागे, तो फिर उनको उसी तरह से देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है जैसे कि घर में गंदगी आ गई, घर में गंदी हवा चली आई तो दरवाजा खोल दो, निकल जाएगी। अब उसको पकड़े रखेंगे, मेरे घर में गंदी हवा क्यों आ गई, फिर झगड़ा करेंगे तो हो जाएगी। सो जैसे कभी एक सूत्र में आता है ना, कभी सुगंधित हवा चलती है, कभी बदबू वाली हवा चलती है, उसी तरह से मन में भी कभी सुगंधित विचार आते हैं, कभी बदबू वाले विचार आते हैं। जस्ट बी ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट, जस्ट बी अवेयर, let them pass, they naturally cease. So understanding of anicca, understanding of dukkha, understanding of anatta, these are the primary understandings. So ये सब अगर हमारी क्लियरिटी हो जाएगी, then naturally will be having some knowledge. So I view right. So there are so many ways. हमने पढ़ा था ना सम्मादिट्टि सुत्ता, Sariputta explains it in all possible ways. सम्मादिट्टि. But this issue of dukh, I think there is another way to approach it also. एक तो हमने देख लिया, but then I observe, and it happened with me very recently, and it keeps happening all the time, that we are in such a hurry to now dispel that dukh. उससे दूर निकलने की जरूरत कोई करने की एक्सपीरियंस करना, भगवान ने Exactly. दुख जो फर्स्ट नोबल ट्रुथ है, जिसे सफरिंग शुड बी अंडरस्टूड, यू नेवर सेड कि उसको हटाओ Exactly. क्या बढ़ जाएगी। ये तो फिर जब उसको अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है, व्हाट इज इट हैपनिंग, क्या हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है मन में, क्या हो रहा है, देखें तो सही। एंड द मोमेंट वी सी इट, देन दीज थिंग्स विल कम टू ये फिनोमेना अराइज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। Ajahn Sumitra says it very nicely. What generally happens is that as soon as we see dukkha, we try to run away from it. If you want to understand it, you have to make it conscious. You have to let it be there. Then only you will be able to understand it. अगर वो उसको भगा ही दोगे या उससे दूर ही भाग जाओगे, तो how will you understand it? So actually, I also found that very useful. So you know, you used to say that the way out of dukkha is through it. That's true. You have to experience it. You have to make it conscious. वो कहते हैं ना कि उसी शायद अजान से मैंने कहा, किसने कहा, to understand means to stand under. Stand under. To stand under. To stand under. तो उसके लिए आपको उसको रोकना पड़ेगा. Experience it. Experience it. This is called suffering, and this is the nature of human realm. This is called suffering. But you see that. बॉडी का असर होगा, मन में होगा, बेचैनी हो रही है, यू सीइंग इट, एंड अभिधर्म विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई। अच्छा देखें, एंड द मोमेंट यू डू दैट, वो इट लुक्स लाइक ए जोक, यू नो। अच्छा ये इससे जेलसी जाग रही है, ये देखो ये वो जो है मात्सर्य भाव जाग रहा है, ये क्रोध जाग रहा है, ये बेचैनी हो रही है, क्या तमाशा मचा हुआ है। इट्स लाइक ए फिल्म जिसमें कि एक डरावना सा सीन चल रहा है, ठीक है जाने दो, अपने आप डिस्पेल हो जाता है, जस्ट बाय मेयर प्रोसेस ऑफ डीपर्सनलाइज्ड सीइंग, इट फिनिश्ड जस्ट लाइक दिस। मतलब विचारों का आता है, जैसे राग द्वेष जो भी आते हैं वो तो निकल जाते जल्दी, जैसे इसको देखो, लेकिन शारीरिक कष्ट जो होता है वो उसकी जो तो अटैचमेंट थोड़ी ज्यादा है ना शरीर के साथ, तो उसके लिए तो होती है, आज का हमारा सुख था ना, वो इसलिए बनाया गया था। वो भी वो इसलिए क्योंकि शरीर से सबसे ज्यादा अटैचमेंट तो शरीर से ही है,
एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वो 5 कंटेम्पलेशन अगर हम रोज करें ना, क्या था पहला वाला? जरा धर्म जरा धम्मोम ही जरा अनतीतो, and of the nature of old age, not one. It is old age is unavoidable, and of the nature of death, that is unavoidable. Whatever is near and dear to me will one day be separated from me, and the owner of the karmas, heir of the karma. So if you reflect on these things, then slowly we understand really कि ऐसा ही होता है. शरीर तो जाएगा ही, शरीर में तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, कितना भी आप कोशिश कर लो. मेंटल लेवल पर तो सब होता है, जब वो नहीं बार बार करेंगे तो हो जाता है ना. I think that is where the meditative practices help. At least that's what I have done. करत अभ्यास की जरूरत ही नहीं. अभ्यास करेंगे तो कैसे होगा, पक्का होगा. Even remembering it, leave aside the meditation, just remembering it again and again and again, दिमाग में घुस जाएगा, वो कहाँ जाएगा. See, the meaning of sati is also remembrance. You can't deny it. And you just remember it again. Buddha himself talks of, हम नहीं कह रहे, वो कहते हैं this should be contemplated by layman and women, monks alike every day. Clearly, yes, sir. Every day you should contemplate. Why is he saying? Because it is greatly helpful. It dispels away negativity, no? It dispels away non-acceptance. That is the biggest problem. Non-acceptance is the biggest problem. बीमार है ठीक है, हो गए, बूढ़े हो रहे हैं, हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, शरीर नहीं चलेगा, दैट्स ओके, जब तक चल रहा ठीक है, नहीं चल रहा तब वो भी ठीक है. कहने में तो बहुत ठीक है, नहीं चल रहा तो ठीक है, पर जब शरीर में पेट को भी कभी नहीं होता ना कि आप जो अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है, कि ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल, अभ्यास की बात है सर, अभ्यास की बात है सर. So Shailesh had a question. There seems to be natural urge to go past dukkha as soon as possible. And then it says that in the follow-up question that even if when we are seeing through this dukkha or standing under it, is there some energy which still lurking to get past it? Is there some energy even when we see through it? Is there some energy? In the sense that even though we are seeing or standing, experiencing dukkha and letting it be, there still remains some energy to get past it or overcome it. इसलिए तो प्रैक्टिस में हम ऐसे ही करते हैं ना साधना में कि ये समता में रहो, वही समता में रहो, इससे दुख हट जाएगा. That thought remains there. इसलिए तो शुरू में तो थॉट वो रहता ही है, बट द टाइम शुड कम फॉर अ मैच्योर मेडिटेटर, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट. देन दी ओपन क्यूरियोसिटी वाला जो एटीट्यूड है ना, बिगिनर्स माइंड, ओपन क्यूरियोसिटी, दैट डोमिनेट्स. देखे तो सही क्या तमाशा हो रहा है. सो अभिधर्मा हेल्प्स काइंड ऑफ थिंग्स because you have created that mimamsa, you have created that mimamsa iddipala. Mimamsa means investigative iddipala. आपने अपना टेंडेंसी इन्वेस्टिगेट करने की बना दी. जब इन्वेस्टिगेट टेंडेंसी बना दी तो ये भी देखने लगे हो क्या रहा है. कौन, चलो इतने मेंटल फैक्टर हमने देख लिए, देखें कितने आते हैं सामने. द मोमेंट यू चेंज योर एटीट्यूड टू दैट, सफरिंग इज फिनिश्ड, एब्सोल्युटली फिनिश्ड. देन यू आर जस्ट सीइंग, अरे क्या हो रहा है, क्या कहानियां चल रही हैं. You cannot investigate without disidentifying. You have to, as soon as you start to investigate, what you are investigating, उससे identification अपना कम हो जाता है. You enter into, this is the nearest you can go to pure awareness. The Shailesh is saying it's that energy, self-preservation of kind. It's a, I don't know what is the self-preservation. Self-preservation is that to continue the notion of I. The investigation, see,
Investigation is the Self preservation of time. I think he should clarify his suggestion. Can't we hear him? We can allow the microphone. Let me allow it. Silesh, if you have a microphone, can you attach it? कहाँ होता है वो? Allow ये बड़ा microphone. हेल्पफुल लगा है जब भी ऐसी परिस्थिति Enable होती है presenters आई क्या है? यूज व्हाट अजान सुमेदल ऑफन Audio में. पूरा करो ना sentence. often suggests Silesh, if you have, this is if you what have a microphone, can you attach it and speak into the microphone? anger laptop is like. Yeah. मैं actually mental commentary करता हूँ. And then the moment I say that the कह रहा था ना वो disidentification अपने आप ही हो जाती है the moment you use those words. Which words? यही this is what anger is. Oh, this is what anger is The like. moment we begin the process of investigation, then the motivation behind it can be to develop your ditti, samma ditti. Then your wholesome motivations. In beginning, obviously this will happen. And slowly the fact that this dispels away will also remain in the memory, obviously. It will remain in the memory. But the motivation is not immediately to run away from it. Motivation is to figure out क्या हो रहा है. And many times it may not work also. It's not like हर बार ही काम कर जाएगा. It will take a lot of time sometimes. Because the impact is so strong. It takes time, but ठीक है. वो ग्रॉस वालों में दसा हो जाता है. हाँ, gross में करेगा. Actually, in one of these things, I also found, the way Ransomware explained that, welcoming suffering, not welcoming as in asking for more, welcoming as in Acceptance. accepting. Your acceptance. So, Acceptance of what is. but whenever we look at suffering, we generally look at it from this motivation of dispelling it. Even if sometimes what happens is that you turn this around and say, if I look at it, it will go away. But even the motivation is it will go away. Then you are Right. again caught in that. Then you can get caught away. So rather than that, if we just say that, you go towards it to welcome it, then you take head on your tendencies to push the suffering away. तो जैसे गुरु कहते ना कोई भी चीज आई है ये भी चला जाएगा वो तो ये भी कहते हैं तो चला जाएगा पर हमारे मन में भी क्या चाहता कि ये आया तो चला जाएगा ये फिर वो बात ज्यादा याद करने की जब सुख का मतलब जब सुख की परिस्थिति हो ना उस समय वो बात याद करना बहुत हेल्पफुल रहता है. ये चला जाएगा. उससे ये नहीं कह रहा तब उस समय ये याद करना बहुत हेल्पफुल है. उससे याद नहीं आता. एक्चुअली दुख के समय जब याद करो ना तो सब बैकग्राउंड में हाँ. इसका एक ट्रेस रहता है कि Natural है. ये अभी अब अरहंत बन जाएंगे तब इनसे बात आएंगे. Since once you pointed this out to me, I actually started deliberately triggering this in moments of elation, and I really found that also very helpful. So elation flattens out. It doesn't. You don't become pessimistic, but it just flattens out. Often worked it out. Then you don't get excited. Excited नहीं होते. You know happy. Okay. Exactly. Exactly. Don't get carried ये away. आपने Otherwise बहुत you get बढ़िया carried किया. away. बिल्कुल. Just totally carried away. So his question. He said that what Rajesh is talking now is what I was about. Sure. So हाइट करने वाले जो पीछे का ना हाइट किया हाइट करो. नहीं हाइट Complications like that. ओए फिर आ गया इसके लिए हाइट ये फिर से कैसे आ गया मुझे बैकग्राउंड में दे देते हैं ये तो ऑटोनॉमस हो गए अपने तरह से मर्जी आके करते रहते हैं. रिफ्रेश नहीं था इसलिए शांति का बिल्कुल भी भरोसा इसे नहीं. बंद कर दोगे? Refuse to obey commands. अच्छा. Refuse to leave. मैं तो सबसे बेसिक और वर्जन यूज करता हूँ. और वो उसमें जो मैंने
लैपटॉप खरीदा तो ना बोर्ड हुई थी और फिर दूसरे में भी एक में एक सॉफ्टवेयर लो दूसरे में दूसरे से और दिमाग खराब हो जाता है। दरअसल कल ठीक है IIT में वो उसका आया तो नहीं, उन्होंने फिर भी सेलिब्रेट नहीं आया था 3 दिन पहले आया रिजल्ट पर जल्दी आ सकता मेडिटेशन IIT वाले पे गूगल पे नेक्स्ट सैटरडे नहीं I'm going on Tuesday. फिक्स हो गया आ गया जवाब आ गया जवाब नहीं आया ना, I checked with the Amravati people, so ऐसा कुछ नहीं है वहाँ सामने। क्या हुआ So they He's going to Thailand अच्छा Tuesday so then I should expect a call from you By if nothing is happening, then obviously I'll not come out, and if something is happening, then if you can figure out I'll let you know. So you're going for how many days? Namcha. 15 दिन 15 दिन नहीं जा सकते बिना उसके, हाँ बिना उस वीजा के। So I'll go to Ranachar. If Ratnavan happens, then I'll Exams में तो रत्नावन में चल रहे so you can join and ये भर चुके हैं ये retreat में जाना है। ये तो पहले ही भर गई तो जब हमने देखी तो उसने कहा खत्म हो गई भर चुकी हमारे पास सूचना नहीं तब आई फॉरेस्ट संघा में सूचना नहीं तब आई जब वो भर चुकी थी अच्छा फॉरेस्ट संघा में when they announced भर गया। So let's see. so but how will you tell me you will call me ऐसे करोगे कर लूँगा वहाँ से वहाँ तो बहुत there's a lot of internet on that. हो जाएगा I don't think that's a problem. अच्छा ठीक है इस जगह इस समय वहाँ पर चल हम गए थे तो हाँ वही तो जा रहे हैं वहाँ पे और हाँ रत्नावन में है वो पता करेगा वहाँ जाके तो पता जाता है ना वहाँ उनसे डेस्क मांग से कहेंगे फोन करके वो बता देंगे कि वहाँ है या नहीं है और पूछ लेंगे भाई हम आ जाएं आज if he says yes then we'll come straight good so I should be ready to go next week You should now meditate where the correct vibrations are created. yes You should do that. कहते हैं वक्त पहले but sir अर्पण must ये appreciate him कि आपने उसको काफी कहा कि पता करो जानसी में का because he could not find him out he's actually going there to locate him उसमें इतना altruistic भी नहीं है। he wanted to go anyway right but दोनों चीजें साथ हो गई so हाँ। that's a good thing all of us are grateful कुछ ये है जरूर कि if I can in any way facilitate what Dasa really wants, then some merit may. अच्छा रहेगा I think having a retreat led by him in Delhi will be a great thing then we'll have so many things to do once he agrees yes उसके बाद असली काम शुरू। then we'll have huge things to do चलो good let us hope it works out Okay, first slide is the classic definition of mindfulness, paying attention to the present moment and non-judgmental. Again, being aware of your thoughts, feelings, body sensations, surroundings, what's arising in the present moment. Go to next slide. So, to link how Abhidhamma can help in meditation, some preliminary info. We already have discussed that Abhidhamma helps in breaking down of the phenomena, and we can look at the attributes which are arising in the present. Or at least Abhidhamma gives a theoretical framework of how
And at the high level, the link which we can see is that the Dhamma horizon, they are temporary and they are changing. And then we can have the discernment whether we are attaching to those mental states or are aware of what's in the present moment. That's the high level connection we can have between meditation and Abhidhamma. And the next slide, number 3, I've directly picked from Sir's presentation notes, is that how there are the different states of mind, alobha, adosh, and amoha, and how the insights in when the mind is in alobha, it can into anisha, and adosha, you can have the insight into dukkha. Can we discuss this more? This Lobe is greed. right. So alob means Right. that there is no greed. We don't have The greed of grasping the things. I want this. I want that. that leads into anicca. No. Is good. So greed. फिर दीपक उसके बाद उसके बाद नहीं I mean just so I think तीनों का पूछेंगे हाँ. तीनों सेंटेंस So Insight into dukkha arises from थ्री adosha. सेंटेंसेस थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें. right. That's the thing. So see, adosh means dosh means aversion. Okay. Aversion means your aversion of not wanting something. Okay. And adosha means to be mind which is free from aversion. And moh is the delusion. And the delusion is the you can say the one of the universal unwholesome mental factor, which is the root of from one of the roots from where all the unwholesome mental factors arise. So at least the last statement clarifies that till the time we have this delusion, the insight into anatta cannot. We cannot penetrate the insight into anatta. But this also leads us to the fact that if we don't look into anatta, which is we don't try to penetrate the moha mind, the other two will keep on rising. It's like a root. तब तक delusion भी रहेगा. So which came first, the chicken or the egg? What I'm Division saying? is the basis. Division is the, I mean, if you see the universal factor जो बनाए थे unwholesome so moha is present in every unwholesome consciousness. आप देखिए जो हमने बनाया था. So, yeah. If you refer to that, then आप open करके देख लो तो screen पे. So moha is a universal. Moha is a. You can share it. Can you share it? I can share कौन से it. slide number बताओ? I can share it from here itself. हाँ मतलब यहाँ पे आ जाएगा. हो गया. See, Presenter हो जाओ. मुझे तो नोट किया? मैं वो माइक तुम्हें वो करना था ना. मेक होस्ट. अभी एक माइक ना बंद हो जाए. नहीं ये तो होना. Classification of the. नहीं not so much. मतलब हम उस पे आते हैं ना ethically very. So universal factors जो हैं मोह
Ahirika, Anuttappa, and Udacha. So these are always present in an unwholesome chitta. So Loha may be present, Dosha may be present. Obviously both of them can never be present simultaneously. So when there is Lobha, Moha will always be present. When there is Dosha, Moha will always be present. And there can be a chitta where there is no Lobha, no Dosha, but Moha is there, which is total delusion. जैसे अंदर confusion हो गया बहुत बुरी तरह से, या mental illness हो गई, he's got into kind of psychosis, totally deluded हो गया. That is possible. So Moha is a universal unwholesome factor. So it is a caution for us that this is the key thing which you should address. If you don't address the universal factor, so occasionally to jagenge. So that's a very key insight which is helpful to us. तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो वो explain कर रहे हैं कि उनकी relationship between these three things. It's only a question of seeing them. That when we have a pleasant experience, the tendency to see it as anicca is very little. Insight into anicca arises alone. अगर लोभ है, greed है तो उसको उसके अनित्य स्वरूप को जानना बड़ा मुश्किल है. Oh, that's the discussion we were having just now. क्योंकि उसके प्रति we don't wish to arise, to finish, go away. So to see that there means the moment is changed from alobha to alobha. The moment you see it. So anicca will arise the moment the mind changes over to alobha. So a very happy situation has arisen. And you remember, it's all impermanent. It will no longer be a state of lobha. It will be a state of alobha. So this is a big thing, because जो भी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, for cultivating of anicca, we should cultivate anicca during alobha. During the lobha state. Lobha state, तभी inside, वही. Not in the suffering वाला. वाले में दुखा को suffering वाले में जब करते हैं, suffering वाले में जब करते हैं तो उसमें inbuilt वो एक greed हो जाता है, यार ये निकलेगी इससे, इसको अनिच्चा कर लो, जल्दी कर लो, अनिच्चा वो निकल जाएगा. Oh, that is the lobe in that. तो वो करते करते उसमें लोभ जाग गए. वो प्रैक्टिस करते करते क्या नित्य है निकल जाएगा, तो एक्चुअली क्या तो अनित्य रहे लेकिन लोग जगा रहे हैं उसके प्रति. बिल्कुल सही. So actually suffering में we should not even contemplate anicca. Should नहीं, तो अपने आप है. But the point being made is that this is the way to strengthen anicca. Yes. To strengthen anicca, you should see it in the because if you remember जो भगवान का वो है ना दुख समुदय, और उसके बाद कहाँ जागता है, where does it rise? नंदी राग सहगता अभिनंदनी. It talks of there where tanha arises. It doesn't talk of tanha from a aversion point of view. It talks of tanha from the point of view of नंदी राग सहगता, राग के साथ जिसको अच्छा मानते हैं, कभी इसको कभी उसको उसके साथ पकड़ के रखता है. There, that is tanha. But we know tanha is other also, but he's focusing on that because that is where we grasp. दुख को तो grasp करते नहीं है ना, तो उसको तो दूर हटते हैं ना. तो जहाँ grasping है उसको छोड़ेंगे तब अनित्य को पक्का पुष्ट होगा. So ये जो एग्जाम्पल में चर्चा चल रही थी उसमें इनफैक्ट जब हम सफरिंग में अनित्य करते रहते हैं, that's more. There is a possibility. I won't say it's always there. There is a possibility, very strong possibility, that it is being used as a ploy to get out of it. Actually, there is a very strong possibility. Actually, वो होता possibility क्या है, वही होता है. मैं यही कहना चाहता कि ना ये मैं शायद अर्पण से एग्री करता हूँ कि वो हमने actually cultivate अनिच्चा उसमें नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. As a training we should. As a training also we should not. We should cultivate dukkha there. That is the point. Correct. That is the point. Correct.
that is the point being mentioned, that when there is a aversion, you should see this is what is point. You should cultivate the understanding of dukha, because अगर आप दुखा को cultivate करने के लिए you need to see it ना, खुशी में कैसे दुखा को cultivate करो? वो जब अनित्य भाव जाग जाएगा तो अपने आप उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि भाई फिर वो अगर अनित्य बोध नहीं जगाया तो जो खत्म हुआ दुख आ जाएगा, समझ आ जाएगी. So these are this kind of advices given, very helpful advices, because usually हम सुख की स्थिति में अनित्य बोध नहीं जगाते, भूल जाते बहुत जल्दी भूल जाते. दुख में याद रहता है कि अनित्य है, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई. सुख में जैसे मतलब क्या जगाएं, देखो मैं सुखी हूँ, ये अनित्य की बात है, ये अनित्य कुछ नहीं. ये जानना है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉयमेंट अनित्य है. I specifically do it every time this happens. If I am caught in a situation of great joy or pleasure, थोड़ा मतलब just try to do it specifically. चला जाएगा. Remember it. नहीं, फॉर्म मतलब consciously, सिर्फ unconsciously नहीं, consciously. मतलब कैसे हाँ, remember, मन में भाव लाके ये सब बदलने वाला है, सब अनित्य है, इसके प्रति अटैचमेंट नहीं करना चाहिए. Just kind of just as we teach others, we teach ourselves. Remember it. Then the consequences of that are wholesome. If you are not mindful, तो क्या होता है, जब वो परिस्थिति बदल जाती है तो बहुत गहरा दुख होता है. क्योंकि हमने कॉन्टेम्पलेट नहीं किया कि ये तो जाएगी. बहुत शादी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हैं, मैं तो खासतौर पे तमाशे के टाइम पे इस साइड में जब होते थे, आई यूज्ड टू स्पेसिफिकली स्कूल ऑफ एक्टिविटी में जाना पड़ता था, और डांस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, एंड यू लिसन टू सम सॉन्ग व्हिच इज वेरी enchanting. So remember it. Just remember it. Just mere remembrance is enough. Otherwise you get just carried away. So sir, अनिच्छा को कल्टिवेट करना चाहिए ड्यूरिंग हेल्पफुल लोभ माइंड, बिल्कुल. एंड दुख को करना चाहिए ड्यूरिंग मोह माइंड, सॉरी दोष माइंड, एंड अनित्य को कल्टिवेट हमेशा करना चाहिए वैसे तो. but why what is that then? Moha is always there, but when it is extreme वाली बात हो रही है ना, when that is the dominant factor. मोहा डोमिनेंट फैक्टर कब है, जब हम प्राइड कर रहे हैं, मैं हूँ, मेरे जैसा कौन है. अच्छा, that is a very dominant factor. So at that moment if you remember, you know, वो मतलब वो इतना बुरा लगता है उसको उस समय याद करना. It hits you like a boulder. क्या होता है कि मैं जानते हुए भी अपने को अहंकार जगा रहा हूँ. These are कुशल उपाय, good suggestions. It doesn't mean that anatta does not operate there. It's only a but these are very good training precepts. Actually, आज कुशल उपाय है. If we look at the जिस मोटिवेशन से स्टार्ट किया कि मेडिटेशन और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं उनका क्या रिलेशन है, बिकॉज मेडिटेशन इज ट्रेनिंग and Abhidhamma is understanding. So in our training, day-to-day life or sitting meditation, I think these principles are very useful, and also because they are different from what we have been trained for. Very good. Or what the default position is. Yeah, what the default position is. So this simple thing is very useful. Yes. I mean, this is a very good framework. Training framework. I think we should have a framework based on this. So we'll request Deepak. No, not Deepak. Chalo, we'll request Rajesh to write footnotes to this. ठीक है भाई दीपक? Actually बात सही है. जो सपाट इस पे अगर छोटी सी अपन पैराग्राफ लिख लें, इसके नीचे ना फुटनोट नोट्स होता है ना, इसमें हर एक में स्लाइड में तो नीचे नोट डाल दो ना. ये आपने पीडीएफ बनाया, पीडीएफ वो है, दोनों है. पीडीएफ है, प्रेजेंटेशन तो वहाँ पे है, प्रेजेंटेशन भी है ना, प्रेजेंटेशन इसी में भी लिखा जा सकता है.
And write can you add something? अरे आप लिए तो PDF के मालिक हैं तो कुछ भी कर सकते अच्छा हैं. हाँ सही बात है. हम नहीं कर सकते. We can't add anything. नहीं तो सब लोग कर सकते कहाँ करते? Comment हाँ, comment होता है वो बड़ा सा. डिब्बा बन जाता. हाँ, but sir, when you actually present PDF, you can present it in the same form. सामने वाले को वो दिखना है और वो आपको डब्बा तो नहीं दिखेगा ना. आपको कमेंट्स दिखते हैं. हमें थोड़ी दिखते हैं. सर मैं PPT में कर दूंगा. हम तो चोरी वाला यूज करते हैं. नहीं हम तो फ्री डाउनलोड यूज करते हैं ना, पैसे वाला नहीं यूज करते. चोरी वाला नहीं. फ्री डाउनलोड करते हैं. इनके पास तो फ्री मालिक डाउनलोड इज चोरी वाला. नहीं No, it is done by there are company. two offerings of It's done by Acrobat. company. Acrobat Reader, which is free, and then Acrobat Producer. Pro, which is तो रीडर में थोड़ी हम लिख सकते हैं. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं लिख सकते. Reader में comments कमेंट डाल सकते हैं ना, वो जो होते हैं आजकल मैं वही तो कर रहा हूँ अपनी बुक की जो आए हुए हैं. हाँ, कमेंट्स डाल सकते हैं, कमेंट और क्रॉस और वो सब करने का उसमें रखा हुआ है. but so you can view all your comments when you present. जैसे कि PPT में होता है, जो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट होती है उसमें तो प्रेजेंटेशन होती है और प्रेजेंटर को प्रेजेंटेशन और कमेंट्स दोनों दिखते हैं. वो PDF में भी कर सकते हैं. Is it? Good, so we stop for the day. So सर सती में तो आए नहीं सर. हाँ, कोई बात Actually, we should Actually पिछले 3-4 दिन से I had having a conversation with her sir. नहीं. Time is right. the only thing I was saying was that next week we'll start from this slide itself. Will be हाँ, नहीं अनिश्चित दुखा ना. इस वीक ही इसका वो एडिशनल डाल देना ना कुछ. वही मैं कह रहा हूँ, वो डाल के लेके आएंगे, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, then we'll go further. और इसमें भी अभिधम्मा और मेडिटेशन में वो पॉइंट भी लिख देना. That basically when we are able to use the insight of Abhidhamma in investigation of what is the mental state in any experience, the whole Anatta Bhav is actually strengthened in that process. In fact, there is one point in the first slide also, which is the day when I was contemplated what is meditation. So we have learned meditation into so many, meditation as a practice into so many forms. Learned from Goenka ji. And there are some other books that I read on meditation. Meditation in plain English by Bhante Gunaratna. And then there is this choiceless awareness, which is also kind of meditation. And then obviously Ram Samidos. Then I found out that what is the best way to describe meditation? What is meditation in this framework is to investigate the hypothesis given by Buddha that the phenomena is dukkha, anicca, anatta. There is a hypothesis in front of us by Buddha, and meditation is to validate it by contemplating whether to validate all this into day-to-day life, whether sitting or day-to-day life. So that way, I found that these two could come together. Otherwise, meditation just becomes a practice of a method. So the key thing is to develop insight. Insight meditation. Yes. We forget that issue of insight. Key thing is to develop insight. If we remain happy with man shant ho gaya, acha, which is a good thing, but cannot be the end of it. The end is not stress management. And is understanding, sammadikti. That is good. So, thank you, It's Suresh. so difficult to. Any question if you have? Suresh here or Guru here? Amit Aditya. आदित्य जी हैं अभी तो. Suresh, I think is left. आपने इनको भेजा था क्या ये? नहीं, PPT. मैंने खाली सिलेश सुधाकर, अर्पण, गरिमा, जो हम पिछली बार थे सब लोग. हाँ, तो आदित्य जी को भेज दीजिए. अब क्योंकि वो प्रेजेंटेशन से कुछ स्लाइड्स आ गई हैं, आ गई हैं, तो मैं सबको भेज दूंगा. So you can tell them that they can add whatever they like. So you can inform them that you can all add them. We are preparing a common presentation based on our understanding, so that we distill out. हमें क्या फायदा हो रहा है? यूटिलिटेरियन लोग हैं, हम ऐसे थोड़ा मानने आने वाले हैं. कुछ निकलेगा फायदा तभी तो कुछ करेंगे. सभी जो आपने लास्ट पॉइंट बोला था, आई वाज जस्ट एडिंग इट राइट अवे, दैट अनलेस आई भूल जाऊंगा. Studying Abhidhamma helps in understanding of anatta.
बेसिक ऑब्जेक्टिव तो वही है. Basic objective, if you read in this book also, basic objective is that only, to break the components of experience into its components. The experience is broken into its components to see for what it is, and then you don't take it personally. So meditation as something, Thank you all. Thank you very much. means of insight rather than stress management. It's so difficult to explain it to anybody. Almost everybody, including all of us, started with so that's the We beginner's start with it, practice. that's okay. stress management. Because beginning motivation तो वही है, दुख है थोड़ा कम हो जाएगा. हाँ, बट उसको आगे देखना कि ये जो कम हुआ है ये टेम्परेरी हुआ है. अब 20 साल से ध्यान कर रहे हैं और हर 6 महीने में जरूरत पड़ रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना. उसको बात है, you're not analyzing your experience in the light of teaching. एंड उसके हमने एक ये चीज ऐड कर दी ना, ये तो कई जन्मों में होगा, ये और ऐड कर दिया.